Thing repeating again. अच्छा, डोज एडजस्टमेंट्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर योर गेसेस? इन विच केसेस वी शुड एडजस्ट द डोजेस? वो छोड़ो ना, टॉक्सिक सीधे टॉक्सिसिटी पे क्या है क्यों जा रहा है? बहुत सेफ ड्रग पे भी तो हम लोग डोज का कैलकुलेशन करते हैं ना। कौन से केस पे? पेडियाट्रिक। ये सिंपल सी बात कहानी आ रही है। बच्चों में क्या फुल डोज दोगे? नहीं दोगे। बच्चों को हम लोग कौन सा डोसेज फॉर्म मेनली प्रेफर करते हैं? बच्चों में हम लोग कौन सा डोसेज फॉर्म मेनली प्रेफर करते हैं? लिक्विड। ओके, तो इन केस ऑफ लिक्विड, व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दैट? नंबर वन, a baby can easily swallow it. The plus point of syrup is that a baby can swallow it easily. ठीक है, टैबलेट निकल पाएगा? नो चांस। बड़े बड़े लोगों में प्रॉब्लम होती है। आई सीन पीपल हु can't swallow टैबलेट। नंबर टू, द वॉल्यूम कैन बी एडजस्टेड वेरी इजीली। ठीक है, अब हिसाब करके बोल दो 5 ml देना है, 4 ml देना है, 3 ml देना है, जस्ट पेशेंट को लिख के देना है फिजिशियन पे, या बच्चे को इतना ml दो, बस आराम से एक मेजरिंग कप तो मिलता है सिरप के बॉटल के साथ। ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, टॉक्सिक, राइट? फॉर दैट देखो, टॉक्सिक एक्चुअली डायरेक्ट आंसर है नहीं। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ एन एडल्ट पेशेंट, इफ यू जस्ट the toxic drugs or narrow therapeutic index drug require dose calculation, that is not the exact answer, because in case of adult there is fixed adult dose. If the body weight is more than 55 kilo, 55 60 whatever, we take it as an adult dose. So वहाँ पे toxic drug होने से भी dose calculation की ज़रूरत नहीं होती है। कहाँ पे होती है? In case of anti-cancer drugs, where we usually what unit we take to measure बॉडी वेट, राइट? हम लोग सिर्फ बॉडी वेट सिंपली मेजर करते हैं, उसके हिसाब से एडल्ट डोज पे कितना होता है उसके हिसाब से हम लोग मान देते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ एंड सम एंटी कैंसर ड्रग्स विच आर वेरी टॉक्सिक, लाइक कुछ अभी नाम नहीं बोलूँगा बाद में, सो इन दोज केसेस वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग बॉडी सरफेस एरिया। सिस्प्लेटिन यूज करते हैं, विनक्रिस्टिन यूज करेंगे, विनब्लास्टिन, ये सब दिस ड्रग्स आर एक्चुअली वेरी मच टॉक्सिक. So in that case, we will use body surface area. We won't use body weight. What is the body surface area of an average adult person? What is the average body surface area of an average adult person? 1.73 meters square. Okay. So we take this as a unit. So in case of cisplatin, the average adult dose is 0.3 to 0.6 milligram per 1.3 meter square BSA. BSA means body surface area. ठीक है, अब body surface area actually the perfect measurement. It should be the perfect measurement, but हम लोग clinically use नहीं करते। क्यों नहीं करते? Body surface area actually is the perfect one. देखो, for example, अगर हम लोग एक adult person को लेके चले तो एवरेज होता है 60। मुझे एवरेज मत लेके चला, आई एम बियॉन्ड एवरेज, तो एवरेज 60-70 लेके चलते हैं। ठीक है, अब एक एडल्ट पर्सन का जितना बॉडी सर्फेस एरिया होगा उसके रेशियो पे एक बच्चे का बॉडी सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है या कम होता है? इन दैट रेशियो, इन द रेशियो ऑफ द बॉडी वेट, ऑलवेज रिमेंबर स्मॉलर क्रिएचर हैव मोर बॉडी सर्फेस एरिया। जितना साइज छोटा होगा बॉडी वेट के हिसाब से उतना ज़्यादा बॉडी सर्फेस एरिया होगा। अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मैदे का गोला ले लो, 1 किलो का ऑलमोस्ट, ठीक है, इतना बड़ा होगा। उसको तोड़ के 10 पार्ट में डिवाइड कर दो। 10 का वेट तो ऑब्वियसली 1 किलो ही होगा ना, हम तो हटा नहीं रहे। किसका बॉडी सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा? छोटे छोटे पोर्शंस का, बिकॉज दे आर एक्सपोजिंग मोर सरफेस। हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है सरफेस, अंदर पे क्या है वो अलग बात है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्मॉलर क्रिएचर्स हैव लार्जर बॉडी सर्फेस एरिया ऑलवेज। इसलिए देखोगे कि जैसे छोटे जो पेंसी होते हैं, दे हैव टू टेक रैपिड फीडिंग, बिकॉज बॉडी सर्फेस एरिया ज़्यादा है वेट के हिसाब से, तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा, तो उनको कैलोरी मेंटेन करने के लिए उनको ज़्यादा खाना पड़ता है। सिमिलरली सेम थ्योरी गोज टू द पीडियाट्रिक पेशेंट्स ऑल्सो। A child need to be fed in at least every 2 to 3 hours. क्यों? हीट लॉस ज़्यादा है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको ढक के रखते हैं। ठीक,
Now, in this CBME, our target is to make some calculations, okay? And after that, the calculate the ये questions आएगा exam पे. They calculate the dose for an adults as well as for pediatric patients. Calculate the dose in case of renal disease. Calculate the loading dose and maintenance dose. Calculate this. Understand the drug dilutions and strength. अब एक एक point को लेके चलते हैं. Pediatric का हो गया. Body weight कम है तो obviously इसलिए dose adjustment हम लोग को करना पड़ेगा. ठीक है. Number 1. Number 2. Why this is important? Calculate the dose in case of renal disease. Why we need to calculate the dose even in case of an adult patients? रेनल फेलर पे डोज एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है? अगर रेनल डिजीज होगा तो ड्रग कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा? ज़्यादा. फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा ना, बॉडी पे टॉक्सिसिटी जमता रहेगा. सम थिंग्स इट एक्सक्रिएट्स मोर लाइक एल्बुमिन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज एंड नॉन आयनिक स्ट्रक्चर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द xenobiotics और अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जिसमें से ड्रग भी आते हैं दैट विल बी एक्यूमुलेटिंग. ओके. सो कुछ ड्रग्स है टॉक्सिक, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हो गया. ठीक है. और भी कुछ छोटे मोटे ड्रग्स हो गए. अभी एग्जांपल धीरे धीरे आता रहेगा, अभी कंफ्यूज करने की ज़रूरत होगी नहीं. ठीक है. सो इन दैट केस इफ द ड्रग एक्यूमुलेट्स एंड इफ द ड्रग हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट्स देन ऑब्वियसली हमको बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. यूजुअली कुछ ड्रग्स को हम एक टोटली एलिमिनेट कर देते हैं रेनालिटिस पे, देना ही नहीं. और अगर हमारे पास ऑप्शंस है नहीं, जैसे कैंसर पेशेंट आ गया जिसका ऑलरेडी रेनल फेलियर है, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना. ठीक है. तो इन दैट केस वी हैव टू एडजस्ट द डोज एज पर द रेनल स्टेटस. अब रेनल स्टेटस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे न्यूमेरिकली? GFR. एग्जैक्टली GFR एक्चुअली उसके लिए हमको पेशेंट को रेगुलर ये रखना पड़ेगा, रेगुलर कैथेटराइज रखना पड़ेगा. सो इसके लिए वी हैव अनदर थिंग दैट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस. सिंपल 2-3 ब्लड वॉल्यूम का मेजरमेंट ले लो, क्रिएटिनिन लेवल के साथ आराम से आ जाएगा. ठीक है. एंड वी हैव ए ब्यूटीफुल फार्मूला फॉर दैट. ओके. अब क्रिएटिनिन लेवल जाना बहुत ईजी है. जस्ट ब्लड सैंपल ले लो, उसमें से तुम आराम से क्रिएटिनिन लेवल का निकाल सकते हो. ठीक. देन आ गया लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज. आई सेड समथिंग अबाउट इट आई गेस, अबाउट द लोडिंग डोज. There are two factors. Some drugs have very long half-life. ठीक. अब ज़्यादा अगर हाफ लाइफ लंबा होगा तो हमारा ट्रीटमेंट के टाइम पे हमारा टारगेट क्या होता है? सपोज हम पेशेंट को टैबलेट या दवाई कुछ भी देते हैं तो उसके लिए हमारा जो डोज हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हाँ पैरासीटामोल देना है तुम्हारा 500 मिलीग्राम, फिर सेफिक्सिम देना है 200 मिलीग्राम, वो डोज हम लोग सेट कैसे करते हैं? What is the parameter for that? Pantoprazole 40, 400 नहीं होगा. Metronidazole 440 नहीं होगा. ठीक है. पैरासीटामोल 650, 65 नहीं होगा. तो एक डोज तो सेट है ना. किस तरह हम लोग ये डोज सेट करते हैं? How we set this dose? Yeah, this is one, but that is not the most important parameter. Half life तो ठीक है. Half life actually important है dosing frequency के लिए, not to set the dose. By therapeutic concentration, every drug needs to be present in the plasma at a certain beyond a certain level. उसके नीचे therapeutic failure. Tolerance level के ऊपर जाएगा तो toxicity. In between there is a portion which is known as therapeutic range. The therapeutic range is what? At the range the drug exerts some pharmacological effect. ठीक है. उसमें से साइड इफेक्ट भी हो सकता है, but pharmacological effect मतलब therapeutic level. But to set the therapeutic level, उसके हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा ड्रग किस डोज पे किस फ्रीक्वेंसी पे देना है. Now this frequency again comes as you said half life. ठीक है. अब आएगा धीरे धीरे आएगा ये चीज़. आई थिंक ये सब चीज़ तो हो जाना चाहिए. फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं होना चाहिए. ड्रग क्लियरेंस पे आएगा. ऑलरेडी दिस टॉपिक इज ओवर एंड आफ्टर 2 weeks यू आर हैविंग योर टेस्ट ऑन दिस थिंग्स ओनली. अभी ऐसे करने से कैसा होगा भाई? चलो. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, थियोरेटिकली इट सेज दैट टू रीच अ थेराप्यूटिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ओके, to reach a therapeutic plasma concentration, a drug requires
4 to 5 हाफ लाइफ्स, ठीक है। इसको हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे। नाउ व्हेनेवर वी गिव अ ड्रग इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल ग्राफ। टैबलेट दे दिया, इनिशियली क्या होगा, 0। अब टैबलेट निकलने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। व्हेनेवर एब्जॉर्प्शन विल हैपन, क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन विल राइज, राइट। अब एक टाइम तक तो राइज होता रहेगा, उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एवरीथिंग। सो फिर इस ग्राफ को क्या होना चाहिए, अब आते आते कहीं पे जाके ये ड्रग हो जाएगा क्या, खत्म। where the stage where the concentration becomes T half, ठीक है। अब सपोज इसका T half आते आते हमने दोबारा एक डोज दे दिया, ठीक है, तो फिर से ही उठेगा। इट हैज नॉट रीच द बेसलाइन येट, इट विल राइज अगेन। अब जो राइज होगा वो इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसे करते करते थोड़ा और इसके बाद जाके एक लेवल पे ये जाके स्टेडी हो जाएगा। दिस इज नोन एज CPSS और स्टेडी स्टेट प्लाज्मा लेवल। प्लाज्मा लेवल। नाउ इन दिस स्टेडी स्टेट प्लाज्मा लेवल का मेजरमेंट का मतलब क्या है कि इस लेवल पे हमारा ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होना चाहिए, सही है। So this will be the steady state plasma level. In other cases, it can be also represented as a therapeutic plasma level. अब ये जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जिस ड्रग का टी हाफ बहुत लंबा है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, इस टी हाफ इज अराउंड 70 आवर्स। ओके, सो दिस 70 आवर्स टी हाफ, अभी 5 हाफ लाइफ ले लो, कितना होगा, 7 to 5 35 350 आवर्स, राइट। 350 आवर्स में कितने दिन होते हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन, ऑलमोस्ट वो मान के चल सकते, राइट। 36 आवर्स पे अगर 1.5 या 15 डेज। एजिथ्रोमाइसिन का डोजिंग शेड्यूल है तुम्हारा 5 डेज, 15 डेज पे थेरेप्यूटिक लेवल पे जाएगा तो ट्रीटमेंट कब होगा इसका। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, इनिशियली वी गिव अ हायर डोज, ठीक है। और एक बात था, आई सेड इन द लास्ट क्लास एज वेल, याद है, व्हाटएवर डिगोक्सिन, its volume of distribution is way too much, right? So as a result, it will go to some other places. So initiation के लिए हम लोग थोड़ा सा extra dose दें. So that extra dose depends on this loading dose. तो loading dose का 2 factors होता है, एक है तुम्हारा T half, दूसरा है तुम्हारा volume of distribution. Okay? And maintenance dose. Maintenance dose is this. ये जिस level पे हम लोग जाने से हमारा therapeutic concentration match करता रहेगा, वो है तुम्हारा मेंटेनेंस डोज। एंड द नेक्स्ट, कैलकुलेट अंडरस्टैंडिंग द ड्रग डाइल्यूशन एंड स्ट्रेंथ। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे तुम्हारे पास मिला एक एम्प्यूल, एम्प्यूल पे क्या होता है, व्हाट इज द एम्प्यूल, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हिंदी कंफर्टेबली, श्योर, ओके। एम्प्यूल देखा नहीं कभी, क्या है, क्या होता क्या इस पे, क्या होता है उस पर, अरे एम्पूल होता है, एम्पूल देखा है ना, सब लोगों ने देखा होगा जिंदगी में, तो बोलो ना क्या होता है इस पर। पहले क्लास में होता, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, कीप इट सिंपल। क्या करते हैं एम्पूल को, बोलो तुमको, अभी मैंने एक एम्पूल दिया, अभी तुम क्या करोगे इसको, ये क्या है, कैरम बोर्ड की करोगे, यू विल ब्रेक इट, आफ्टर ब्रेकिंग व्हाट विल डू, हाँ यस, तो इतना टाइम लगता है कि इंजेक्टेबल ड्रग्स होता है उस पर। अब फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चे को इंजेक्शन देना है हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए डोज एडजस्टमेंट चाहिए। अब एम्प्यूल तो बच्चे के लिए अलग से बनेगा नहीं, उसमें पैसा लगता है, तो फ्रॉम दैट एम्प्यूल पे होता है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे 10 मिलीग्राम पर 5 ml, 10 मिलीग्राम पर 2 ml, ऐसे होता है। वहाँ से तुम वेट से कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देन यू विल कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम, दैट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ ड्रग। दैट्स व्हाई दिस डाइल्यूशन कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ यू कीप इट सिंपल, ऑल दिस कैलकुलेशंस इज वेरी इजी। अगर सिंपल नहीं रखोगे तो डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज कीप इट वेरी वेरी सिंपल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोज।
our target is to give the proper drug to the, उस दिन बोला था मैंने, proper drug to proper person at proper time or proper duration, yes, and in proper dose. गलत मेडिकेशन गलत इंसान को गलत डोज पे गलत टाइम पे नहीं देना. फॉलो करोगे? 3.5 साल के बाद देखते. So the definition: this is the appropriate amount of a drug required to produce a certain degree of response in a patient given at a time and which can be repeated at an appropriate interval to produce a desired therapeutic effect. Or it is the quantity of a drug which is sufficient to diagnose or cure a disease. Okay. Degree of response in a patient given at a time and which can be repeated at an appropriate interval to produce a desired therapeutic effect, or it is the quantity of a drug which is sufficient to diagnose or cure a disease. अब देखो ड्रग का डेफिनेशन पे 2 चीज होता है. एक है 3 चीज होता है. एक है प्रिवेंट, दूसरा है ट्रीटमेंट, तीसरा है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए भी ड्रग लगता है ना? कौन सा ड्रग लगता है डायग्नोसिस के लिए? बेरियम. वेरी गुड. सो हियर बेरियम इज अ ड्रग. हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट एक्सरे के लिए, तो दैट कंटेन्स एन आयोडीन कंटेंट, सो दैट डाई इज अ ड्रग. ओके. सो प्रिवेंशन हो सकता है, जैसे वैक्सीन हो गया, थेरेपेटिक तो थेरेपेटिक हो गया, डायग्नोसिस दोस डाइज एंड दिस बेरियम एंड एवरीथिंग. ठीक. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ फॉर डायग्नोसिस आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट डाइज, बेरियम मिल हो गया. For prevention, vaccines, all vaccines are basically preventive, but these are also comes under the drug only. And for treatment, okay? Now, some drugs need to be given at an infusion. For example, dopamine, dobutamine, noradrenaline, ठीक है? Then isoprenaline. So all these drugs need to be given as an infusion. इसको हम लोग bolus, जो हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, that is called as bolus dose. ठीक है. सो दैट बोलस डोज वी कैन नॉट इंजेक्ट एवरी ड्रग. जैसे डोपामिन हम लोगों ने अगर पूरा डोज बोलस पे दे दिया, पेशेंट विल डाई इमीडिएटली. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका करते हैं इन्फ्यूशन पे. सो इन सच एज इमरजेंसी सिचुएशन, इन्फ्यूशन पंप को किस रेट पे सेट करना है, फॉर दैट ऑल्सो बी कैलकुलेशन इज नीडेड. ठीक है. जैसे सिंपल डोपामिन का एग्जाम्पल दे देता हूँ. लोअर डोज पे इट वर्क्स इन ए डिफरेंट वे, हायर डोजेस पे this works in a different way. So initially in those cases we have to assess कि कौन सा ड्रग को हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन पेशेंट केम विद सीवियर डिहाइड्रेशन. अभी सीवियर डायरिया हो गया पेशेंट को, पेशेंट इज इन सीवियर डिहाइड्रेशन. अब सीवियर डिहाइड्रेशन अगर सडनली हो गया किसी को, देन देयर इज अ क्रिटिकल कंडीशन नोन एज AKI. फुल फॉर्म AKI, एक्यूट किडनी इंजरी. तो उसके लिए हमारा टारगेट क्या होता है कि रेनल परफ्यूजन को बढ़ाना. तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डायलेट द रेनल वेसल्स. ठीक है. डोपामिन एट ए लोअर लेवल इट इंक्रीजेस द रेनल परफ्यूजन. उससे ऊपर के लेवल पे इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड इंक्रीज द बीपी. सपोज सेप्टिक शॉक पे आ गया पेशेंट, नॉट इन रेनल फेलियर, यूरिन पास हो रहा है, पेशेंट इज इन सेप्टिक शॉक मीन्स सीवियर हाइपोटेंशन. तो इन दैट केस वी नीड टू बी गिव ए लिटिल बिट हायर डोज ऑफ डोपामिन. ओके. तो इस तरह से असेसमेंट के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना है. सो प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूलास. फर्स्टली लोडिंग डोज. यू कैन सी आवर हियर वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द टी हाफ. आवर मेन फोकस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो लोडिंग डोज इज इक्वल टू थेराप्यूटिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. What is the definition of loading dose? This should be an important question. Then comes the maintenance dose. So this definition is also vital. A maintenance dose may be required in some cases to maintain a steady state. ये level. हमारा जो target plasma concentration है हमको उस level पे maintain करना है.
So to maintain that level at the dose which is needed, obviously dose means सिर्फ दवाई का volume नहीं, it includes the frequency as well. Okay, so at the dose or the the amount of drug and the frequency what we need to maintain that steady state level or a target level, this is known as the maintenance dose. ठीक है, तो उसके लिए plasma clearance important, means renal clearance, your GFR हो गया या creatinine level हो गया, ठीक है. तो the formula is therapeutic plasma concentration in multiplied by clearance. Written? Clear? Okay. Then apparent volume of distribution. Is this concept clear to everybody? Apparent volume of distribution. If we take the body as a chamber, okay, so the concentration of the drug which was supposed to be provided all drugs has been distributed equally to every portion of our body. Okay? तो इसके लिए सिंपल है volume of apparent volume distribution. This is also signified by the symbol V suffix D. Volume of distribution. V for volume, D for distribution. The total amount of drug in the body means suppose we are giving certain drugs at a dose intravenously. So we'll assume that all the drugs inside the system. ठीक है, तो that system contains all the drug. उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो तो ब्लड सैंपल से निकाल सकते हैं. ओरल पे क्या होगा, इंजेक्टेबल पे तो पूरा ड्रग मिल गया, ओरल पे क्या होगा. Now from this formula what will add or subtract? ओरल एब्जॉर्प्शन पे क्या क्या फैक्टर्स काम करेंगे. Most importantly, which should be significance here. Okay, let me give you hints. The word starts with B. The word starts with B. क्या बोलना चाहिए, अभी तो बोलो. सब पढ़ो ऐसा नहीं होगा. Come on guys. The important thing in case of oral dose we have to multiply this by the fraction of bioavailability. जैसे किसी ड्रग का bioavailability अगर 70% है, so we'll multiply by what? Suppose किसी ड्रग का bioavailability है 70%, so what will we add? Sorry, multiply by which number? With this formula, which number we will add? %70. सब लोग मैथ्स भूल गए, ट्वेल्थ खत्म, मैथ्स खत्म. फार्म मेडिकल पे मैथ्स चाहिए भाई, मैथ्स मत भूलो, जिंदगी भर चाहिए. हाँ, 30 क्यों करेंगे, बायोअवेलेबिलिटी 70 है. We'll add 0.7. Then आ गया therapeutic plasma concentration. Now we can get this therapeutic plasma concentration from various clinical studies. ठीक है, तो from those clinical studies we determine कि हाँ इस ड्रग का ये concentration हम लोग को चाहिए. Now we can formulate that at what frequency or what frequency and at what dose we can give the patient so that the patient can achieve therapeutic plasma concentration as early as possible. Now देखो यहाँ पे it takes approximately 4 to 5 half-lives to reach this state. That's why in case of drugs which have very long half-life, here we have to consider this half-life. In those cases, loading dose is important. Okay. Then comes plasma half-lives. It is the time taken for the plasma concentration to be reduced to half of its original value. This should be simple. ये हम लोग physics पे radiation से पढ़ते आ रहे हैं, right? The definition is same. Some drugs, see there are two types of kinetics which drugs follow. One is first order and another one is zero order. ठीक.
तो फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा एक परसेंटेज और एक रेशियो के हिसाब से चलता रहेगा. सो द ग्राफ्स ऑलवेज लाइक दिस. सो इन दैट केस हाफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीरो ऑर्डर पे हाफ लाइफ इतना सिग्निफिकेंट है नहीं, बिकॉज हमेशा एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ. अब आ गया डाइल्यूशन. देखो, इन केस ऑफ एनी dilution is important in case of liquid preparations. Could be injectable, could be syrups, ठीक है, तो और suspension, ठीक है. So in those cases we may need to advise the patient to give a different volume depending on the patient's body weight and age. Correct? Okay. अब इसको एक्चुअली तीन हिसाब से हम लोग कर सकते हैं. वन इज milligram or gram if this is solid, because most of the drugs जैसे पैरासिटामोल टैबलेट पे भी मिलता है, सस्पेंशन पे भी मिलता है. हमको कौन सा पता है? हमको पता है सॉलिड फॉर्म का. ये जैसे एडल्ट डोज हो गया तुम्हारा 500 मिलीग्राम, मीन्स इफ यू डिवाइड इट वी कैन गेट अराउंड 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे. सॉरी, एंड 3 to 4 टाइम्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. तो सस्पेंशन पे आने से सस्पेंशन देने से हमको हिसाब करना पड़ेगा उसी से. वी हैव टू कैलकुलेट द डोज एट द मेजरमेंट ऑफ मिलीग्राम ओनली. सो वी हैव टू कन्वर्ट द वॉल्यूम इनटू ग्राम. सॉरी, वी हैव टू कन्वर्ट द ग्राम इनटू वॉल्यूम, अदरवाइज हम लोग सस्पेंशन मेजर नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है मिलीलीटर. कुछ ड्रग्स ओरिजिनली लिक्विड ही होते हैं, ठीक है. सो इन दैट केस ml और लीटर पे तो कभी नहीं देंगे हम लोग ड्रग, ठीक है. तो इट विल कम एज ml ओनली. जैसे ORS solution. ORS मत बोलो, ORS solution. ORS is solid. What is the full form of ORS? Yes, it's salt. When the salt is mixed with water, then it becomes solution. ठीक है. तो ORS का भी मेजरमेंट होता है entirely liquid पे. Okay? जैसे in case of pediatric patient whose age is less than 2 years or less, in those cases we take 20 ml per kg. ठीक है. ज़्यादा देने से क्या होगा? हम लोग बच्चे को बहुत सारा ORS खिला देते हैं. इडिमा स्वेलिंग मतलब सी पीडियाट्रिक पेशेंट्स किडनी इज नॉट डेवलप्ड, मतलब तो वो निकाल नहीं पाएगा. हम लोग निकाल देंगे. बॉडी पे अगर ज़्यादा फ्लूइड होगा तो आवर किडनी इज क्वाइट केपेबल ऑफ क्लियरिंग द वर्क, बट पीडियाट्रिक पेशेंट्स किडनी कांट क्लियर इट. तो कहाँ पे जाएगा? बॉडी पे रह जाएगा, निकलेगा नहीं. सो दैट विल रिजल्ट इन टू वॉल्यूम ओवरलोड व्हिच विल बी manifested as edema, swelling, renal failure, maybe heart attack as well, heart failure as well. ठीक है. So measurement of dose is very important. Number one. Number two, burn patients. We have a typical formula to calculate the dose in burn patients. Surgery people will tell you nicely about it. Burn patient पे क्या होता है? There is burning. And because of the exposure to the heat, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा. वो प्रोटीन कहाँ पे जाएगा? किडनी पे. किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है. तो वो जाएगा क्या? किडनी पे, रिजल्टिंग इनटू लिटिल बिट पार्शियल रेनल फेलियर, ठीक है. अब उस पर भी हम लोग अगर बहुत ज़्यादा डोज का फ्लूइड दे देंगे, बिकॉज फ्लूइड विल इवापोरेट बिकॉज स्किन ओपन है. Why our body preserves water? Because the skin layer is keratinized, it is protecting. अगर तुम इसको हटा दोगे, it will evaporate from the surface, resulting into fluid depletion, hypotension, then heart will be compromised, the person is no more. ठीक है. So depending on the percentage of the body which has been burned, we need to calculate them very minutely in case of mls. कि कितना fluid देना है उसको. कम देंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, ज़्यादा देंगे रेनल फेलियर होगा. कुछ भी नहीं कर सकते. तो दैट मार्जिन हैज टू बी मेंटेन्ड. देन IU. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IU? इंटरनेशनल यूनिट. किस चीज़ों पे होता है हम लोग इंटरनेशनल यूनिट मेजर करते? ना ग्राम, मिलीग्राम, ना ml, लीटर, एक्सेट्रा. व्हिच टाइप ऑफ ड्रग्स? इट इज रिटन एज बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस. मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल बोलो जो सबको पता. Another more important, जहाँ पे डोज कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज करना पड़ता है. विटामिन तो ठीक है, हम लोग का फिक्स यूनिट है 50,000 बिलो 6 months, वो 1 लाख बियॉन्ड 6 months, राइट. यही तो प्रोटोकॉल है. एटलीस्ट यहाँ पे दो तीन जन के घर पे तो लेते हो, है क्या? पता है, हर घर पे होता है, मेरे घर पे भी.
दिस इज द कॉमनेस्ट ड्रग व्हिच नीडेड टू बी कैलकुलेट वेरी माइन्यूटली. ठीक है, इंसुलिन. ठीक है, तो स्ट्रेंथ हम लोग टोटली 3 टाइप का स्ट्रेंथ हम लोग एक्सप्रेस करेंगे. वन इज वेट बाय वॉल्यूम. किस चीज़ों पे होता है? इफ सॉलिड ड्रग इज डिजोल्व इनटू लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, देन वेट बाय वेट. वेट बाय वेट कहाँ पे करेंगे? इट हैज बीन डन एक्चुअली वेरी लेस केसेस. वेट बाय वेट, a good example is ORS. वेट का रेशियो होता है, जैसे इतना सोडियम, इतना पोटेशियम, इतना क्लोराइड, इतना साइट्रेट, इतना ग्लूकोज. ठीक है. नेक्स्ट, इफ वी वांट टू डिसॉल्व अ लिक्विड इनटू द लिक्विड, इट कम्स इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. जैसे इंजेक्टेबल्स हो गया. हम लोग अल्कोहल को ड्रेसिंग के लिए डाइल्यूट कर रहे हैं बिकॉज द रेक्टिफाइड स्पीड. टू कैलकुलेट दिस टोटल 3. क्या? W by V means weight by volume. W by W means weight by weight. Number 3, V by V means volume to volume. Okay. These are the ratios. Did someone bring pen drive? किसके पास पेन ड्राइव है? ठीक है, फिर स्लाइड शेयर. तो सिंपल, अगर सपोज तुमको अगर एक ऑल्टरनेट डोज निकालना पड़े, देन यू शुड बी कैलकुलेट लाइक दिस. प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली विथ फोकस. So 5 ml of the vial contains 10 milligram. Usually vial 5 ml का होता है, एम्पूल 2 ml का होता है. ठीक है, तो वायल मान के चलते हिसाब के सुविधा के लिए. तो वो vial से if anyone says that the vial contains 10 milligram of drug, okay, means 5 ml of the solution contains 10 milligram of the drug. अब तुमको यहाँ से निकालना है कि 2 मिलीग्राम कितने वॉल्यूम पे होता है, बिकॉज पेशेंट को 2 मिलीग्राम चाहिए. कैसे करोगे? पेशेंट को चाहिए 2 मिलीग्राम, वायल पे 10 मिलीग्राम. कैसे करोगे सर? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल मैथ्स. पाँच ml पे है 10 ग्राम, सॉरी या 10 मिलीग्राम है 5 ml पे, राइट. सो डायरेक्टली हम लोग कैसे जाते हैं? सो 1 मिलीग्राम इज प्रेजेंट इन 5 by 10, right? So what is our target? Our target is 2 milligram. So 2 milligram will be in 5 by 10 multiplied by 2. मतलब 1. Simple. ये तो हम लोग स्कूल में करते थे. वही हिसाब है, दूसरा कोई स्पेशल कुछ नहीं है. सिंपल रखो. कीप इट सिंपल. आई एम टेलिंग यू अगेन. कॉम्प्लिकेटेड करोगे भूल जाओगे. सीरियसली बोलो. Now, we have certain formulas for that. Now, we take as 70 kilo as an average adult body weight. ठीक है. Now, ये बोला जाता है कि सपोज कोई अगर pediatric patient अगर 55 kg weight से ज़्यादा हो, then give adult dose. Provided the pediatric age is not very less. Less means not less than 7 years. Because before 7 years, patients plasma volume थोड़ा सा alter होता है. ठीक है. लीवर प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है तो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा. किडनी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, सो इट वोंट बी एबल टू एक्सक्रीट प्रॉपरली. ठीक है. सो दिस फैक्टर्स ऑल्सो नीड टू बी थिंक. सो वी हैव another formula for age as well. So here actually if we know the adult dose, okay, जैसे पैरासीटामोल का adult dose हो गया for fever is 650 milligram or 500, it depends actually. So in that case, adult dose multiplied by weight of the patient divided by 70. अगर हमको पेशेंट का वेट पता है, यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट का एज ग्रुप के साथ रिलेट करके वी नो दैट द डोज ऑफ द ड्रग इज दिस मच पर केजी बॉडी वेट. सो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली. जैसे फॉर एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन, वेरी कॉमन एंटीबायोटिक. ठीक है. अब विंटर सेशन है, ऑलमोस्ट सबको एक बार तो लगेगा, राइट. So in that case, amoxicillin dose is how much? Around 50 milligram per kg body weight in frequencies 3 times daily. ठीक है. तो पेशेंट का वेट हमको मिल गया 10 किलो, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. Then depend on the body surface area. Now there are 2 formula. One is Mosteller's and one is Dubus.
डुबोइस का दो प्रॉब्लम है. कैन यू सी द फॉर्मूला प्रॉपर्ली? विजिबल द पावर? विजिबल क्लियरली लास्ट बेंच? दिखाई दे रहा है? ठीक है. सो फर्स्ट डुबोइस फॉर्मूला को लेके चलते हैं. सो बॉडी सरफेस एरिया एक्चुअली द यूनिट इज इन मीटर स्क्वायर इन बोथ द केसेस. यूनिट मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो कैसे होगा? वेट इन किलोग्राम टू द पावर 0.0425 multiplied by height which is in centimeter to the power 0.725 multiplied by 0.007185. फर्स्ट ड्रॉबैक क्या हो सकता है इस फॉर्मूले से? क्या लग क्या ड्रॉबैक हो सकता है? डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड. डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, नंबर वन. नंबर टू, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको हिसाब करना बहुत ही मुश्किल है सीरियसली. तो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर प्रॉब्लम. सपोज इफ एनीवन इज सीवियरली ओबीस और सीवियरली कैकेटरी, मतलब वेट का डिफरेंस अगर एकदम एक्सट्रीम पे हो गया, जैसे कोई हो गया 200 किलो का, ठीक है, या कोई हो गया तुम्हारा 30 किलो का, जैसे कैंसर पेशेंट्स पे होता है. तो इन दोज केसेस वी वोंट बी एबल टू कैलकुलेट दिस वन प्रॉपर्ली. कंपैरेटिवली मोस्टेलर्स बहुत एक्यूरेट है एंड द कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. सो होगा क्या? स्क्वायर रूट, सिर्फ ऊपर का स्क्वायर रूट है. ठीक है. तो हाइट इन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई वेट इन किलोग्राम, जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको स्क्वायर रूट करना, विच इज वेरी इजी. सिंपल कैलकुलेटर पर आ जाएगा. एंड दैट रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 60. अगर तुम पूरा लेके चलते हो, अगर तुम इस पूरे को अगर तुम करोगे, देन हाउ विल यू चेंज इट? Did you get my point? सपोज हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है कि स्क्वायर रूट दिया है यहाँ पे, राइट? ठीक. अगर हम ये पूरे जगह को अगर स्क्वायर रूट हिसाब से लेंगे तो हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें? दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर? Now, if I want to give the square not here, but all together here, इसमें तो हमको इस फॉर्मूले में क्या चेंज करना पड़ेगा? Will it remain the same? क्या चेंज होगा? 60. क्या होगा नंबर यहाँ पर? तो नंबर कितना होगा? नंबर बोलो. You can use a mobile for calculation. If I want to involve 60 into square also, then we have to just multiply by this one, equal to 360. Super. So usually we do prefer Mosteller's formula. Dubois का बहुत ही difficult है. And also, so there are there are significant level of errors if the body weight is in the extremes. Pediatric dose calculations के लिए दो formulas हैं. एक है Dilling's, दूसरा Young's. You can see. Now both of these should have different values, right? पहला क्या है? Adult dose, okay, into multiplied by age in years divided by age in years plus 12. This is the Young's formula. And Dilling's पे 12 को छोड़ दिया गया. 12 की जगह पे that is the simply divided by 20. Now can you tell me at what age Young's and Dilling's will give the same result? At one age Young's and Dilling's will give the same result. At which age? 8 years old. यहाँ पे 12, अगर हम लोग यहाँ पे 8 डालेंगे तो 8 plus 12 is equal to 20. Only at 8 years, Young's and Dilling's will give the same result. But here actually for this factor, we are changing the dose according to the age. So Young's formula is also the preferred formula for calculating comparatively the proper dose if we don't have a proper equipment for measuring weight. मोस्ट कॉमनली हर पीडियाट्रिक ओपीडी में विंग मशीन होता है. ठीक है. और सपोज तुम रास्ते पे चल रहे हो, एक एक्सीडेंट हो गया, या सपोज तुम्हारे घर पे किसी ने पूछ लिया कि यार तेरा भतीजे को बुखार हुआ है, कितना दवाई, वेट कितना है आंटी, पता नहीं.
ठीक है, तो पता नहीं इससे तो कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा ना. One is you can anticipate that this much will be the body weight. और चलो भाई हमारे पास Young's formula है, बात Young's formula. Okay, Dilling's formula give a constant numerator और denominator. ठीक है, denominator तो बोलते हैं ना इसका, नीचे जो होता है, yeah, denominator. Actually I am from Bengali medium, so it creates a little bit confusion. So the Dilling's formula will give you a fixed denominator, while in Young's the denominator changes as per the age. Okay, yeah, number one. Number two, for children up to 2 years of age, it needs a bit more precision because there is a significant difference in the body surface area compared to an adult body surface area ratio, by ratio. Okay, so dose here, adult dose in multiplied by age in months divided by 150. Because यहाँ पे months पे आएगा हिसाब, age पे नहीं, years पे नहीं. Young's और Dilling's पे months का कोई चक्कर नहीं है. यहाँ पे we are taking the approximate age in years only. But 2 साल तक month is also has significance, even days is also important. Okay, so here it includes months. So adult dose multiplied by age in months divided by 150. Simple. Then on weight basis, अब adult dose हमको पता है, एवरेज एडल्ट वेट भी हम लोगों को पता है, विच इज कितना है? सामने तो लिखा है 70. प्लीज रेस्पॉन्ड गाइस, अदरवाइज तुम्हें भी नींद आएगी कि आएगी कि मुझे भी नींद आएगी. आई वांट टू स्लीप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नीदर यू शुड. सो द डोज, एडल्ट डोज हमको पता है, सो द रेशियो विल बी बच्चे का बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करेंगे एडल्ट डोज डिवाइड बाय 70. ठीक है. फॉर एल्डरली पेशेंट्स दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे एल्डरली पेशेंट्स का भी वेट एडल्ट डोज लेके ही चलेंगे. बट हियर द फैक्टर इज कोमोर्बिडिटी. नाउ यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 60 नोबडी इज 100% फिट. थोड़ा सा लीवर कॉम्प्रोमाइज तो होगा, then renal, then kidney will be compromised. What could be the other factors? लीवर और किडनी का छोड़कर क्या होगा? Sorry? Weight. Yes, comparatively the weight is a bit low. Then ड्रग कहाँ जाते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद? इंजेक्शन दिया या टैबलेट या कुछ भी लिया, after the when the drug will go into the system, where it can go? Lipid soluble drugs, it will go to the adipose tissue, body fat जाएगा ना. स्टोरेज तो लिपिड soluble ड्रग से कहीं पे तो स्टोरेज होगा. If it is not also lipid soluble too, it will go to some plasma protein. It will be deposited in certain tissues. Okay. Now, किसी के घर पे दादाजी या नानी जी जिंदा है? What is their fat content like you? उनका स्किन कैसा होता है? Wrinkling means there is less subcutaneous fat. So that also has a significant level. बहुत कम होता है यूजुअली. जितना ऊपर का एज जाता है, लोगों का सबक्यूटेनियस फैट या स्किन कॉन्ट्यूर या प्लाज्मा प्रोटीन, दिस ऑल यूज्ड टू गेट ऑल्टर्ड. यूजुअली कम होता है, ज़्यादा तो होता नहीं. वेरी रेयरली यू विल फाइंड पीपल हुज स्किन कॉन्टेक्स्ट इज एज नॉर्मल एज अदर्स. ठीक है. सो दोज आर द फैक्टर्स. सो इन एल्डरली पेशेंट्स देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर दैट. वी हैव टू कंसिडर द वेरियस कोमोर्बिडिटी एंड सर्टेन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है. क्या होता है? जैसे वेरियस आर द टॉक्सिक ड्रग्स. जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है एमाइनोग्लाइकोसाइड. दिस इज एन एंटीबायोटिक, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक पार्टिकुलरली. सो हियर वी कैन एडजस्ट द डोज प्रिसाइजली एज वी आर गिविंग डायरेक्ट इंजेक्शन. ठीक. सो इन रेनल फेलियर्स वी हैव ए फॉर्मूला नोन एज कॉकक्रॉफ्ट-गॉल्ट फॉर्मूला. ओके. तो कॉकक्रॉफ्ट-गॉल्ट फॉर्मूला को आने से पहले हम लोग देखते हैं कि renal clearance पे which parameter is important. Everywhere you will find, if you want to get any relation with the renal disease and the drug dose,
everywhere you will find one term, creatinine clearance or clearance, simply clearance. In short, CL, capital C, capital L. ठीक है ना. क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकालने के लिए दो तरीके होते हैं. नंबर 1, रेगुलर ब्लड टेस्टिंग. ठीक है, सिर्फ एक सैंपल ले लो and it will tell you the creatinine clearance level from 4 months until unless the creatinine value device. So that value is creatinine, serum creatinine level. सिर्फ एक ब्लड टेस्ट काफ़ी. So depending on the creatinine clearance, what is the dose? It is the adult dose divided by creatinine clearance in renal insufficiency divided by creatinine clearance in normal individuals. एक normal average adult individual का creatinine clearance होता है 100 to 120 ml per minute. ओके, नाउ 100 to 120 तुम कोई भी लेवल लेके चल सकते हो. 100 मान के चलते हैं बिकॉज द कैलकुलेशन बिकम्स बिट इजी. ठीक है ना, हमको तो अभी क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकालना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए हमारे पास है ये फॉर्मूला, इज नोन एज, नाम याद रख लो, कॉकक्रॉफ्ट-गॉल्ड फॉर्मूला. ओके, सो इन दिस व्हाट इज द फॉर्मूला? 140 माइनस एज इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय वेट इन kg डिवाइडेड बाय 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन. ये हमेशा मिलीग्राम पर डेसिलीटर भी आता है. ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 इन केस ऑफ मेल, 0.85 इन केस ऑफ फीमेल. Now why that actually I have searched many places. Q 0.85 is for the female, but I didn't get it. If I get, also I will tell. ठीक है, 140 minus age in years multiplied by body weight in kg. This entire thing will be divided by 72 into serum creatinine level, which always comes in milligram per deciliter. तो यहाँ से हम लोग को मिल गया क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल. उसका हम लोग प्लॉट कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, अगर नॉर्मल आ गया तो नॉर्मल आ गया. ठीक है, अगर कम आ गया देन द डोज विल लेस. दिस इज द लेवल 100 to 120 ml per minute. ठीक है, all the other things if you can take it into count, which is practically impossible, just theoretically we can count it, because अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे भी कुछ ना कुछ निकल. Our sweats evaporate. Through our saliva also many drugs or many things get excreted. ठीक है, so इतना सब कुछ हिसाब करना पॉसिबल नहीं है, because the overall clearance, if you want to calculate it precisely, this clearance by kidney, clearance by liver, plus clearance by others. It may be sweat, it can be saliva, it may be tears, it can be anything. Okay, so ये चीज़ें से तुमको कभी भी दिया नहीं जाएगा, so relax about it. Clearance का definition is a clearance of a drug is the theoretical volume of any body fluid from which the drug is completely removed in unit time. अब देखो theoretical volume की बोल, because कोई भी portion से drug won't be eliminated completely. It always comes under as a ratio of T half. जैसे एक ड्रग है जिसका मान के चलो T half है 1 घंटा, वैसे है वैसे कोई भी ड्रग X, its half life is 1 hour. हम लोग दिए कितना 100 मिलीग्राम दे दिए. अब 1 घंटे के बाद लेवल कितना आएगा? 50. तो कंफ्यूजन क्यों? ठीक है, तो 2 घंटे के बाद कितना होगा? 25. 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद 6.25. ठीक. कितना घंटा हुआ था? मैं भी भूल गया. 4 घंटा. 5 घंटे के बाद 3.125. अभी मैथ्स का दिमाग खुल गया लोगों को. 6 घंटे के बाद ऐसे चलता रहेगा. इट विल नेवर कम 0. It may go into 0.0000 something, but it will never reach 0. So the term, the completely removed by unit time, it is not possible. कुछ रहेगा, ठीक है. But to calculate something, we need to take, जैसे हम लोग assumption लेके चलते थे ना मैथ्स पे, algebra में या उस पे. Let's say this amount is this x. So that x is this one, completely removed. We're assuming that this much drug is getting cleared from blood completely, जो एक्चुअली कभी होता नहीं. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो.
Calculate the dose for a 35 kg pediatric patient if the adult dose for a 70 kg patient is 500 mg. At least 3 of you should answer separately. Patient का weight कितना है? What is the patient weight? Dose कितना है? Adult dose? 500. तो हम लोग मान के चलते हैं एवरेज एडल्ट बॉडी वेट कितना है? 70. So what is the formula? Patient weight divided by average adult body weight multiplied by average adult dose. तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है. This 3 half कर दो 250 खत्म. 35 for 70 आंखों के सामने. See the numbers. Number is very funny. समझे? See the numbers. 35 और 70 एकदम तो एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा है. तुम इमेजिनरी यहाँ पे क्लाइंट आना हो गया तो. That's why I put this intentionally. I put this here. Okay, चलो. What amount of drug solution will you administer from a 10 ml of vial containing solution of a strength of 2% of the drug if the required dose is 20 milligram? ये थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको. Strength 2%. मतलब क्या है इसका? Any idea? Strength 2%. What does it mean? 2 gram? Yes, exactly. 2% means 2 gram of the drug in 100 ml of solution. This is, ये कौन सा है? This is weight by volume. If you see some syrup or something, you'll always see that कुछ लिखा है छोटे से ब्रैकेट पे W by V और V by V. ये सब चीजें लिखते हैं. In fact, the cosmetics also which you buy, उस पे लिखा होता है. रोज वाटर तो लड़के खरीदते हो डेफिनेटली. ना मत करो, सब लोग खरीदते. तो इन दैट ऑल्सो जस्ट चेक. अच्छा, जस्ट खोल के लगा मत लेना. पीछे क्या क्या लिखा है वो भी दैट ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? प्लीज एनीवन रीड लाउडली. ओके, थैंक यू. प्लीज सिट. नाउ 10 ml का वायल है, 2% का स्ट्रेंथ है, तो पूरे वायल पे कितना रहेगा? एंड द स्ट्रेंथ इज 2%. 2% मीन्स 2 ग्राम, मतलब 2000 milligram. Why I have converted to milligram? Can anyone say? Yeah, the question, our desired dose is in milligram. ठीक है. Now अभी यहाँ पे क्या है हिसाब से? 2000 milligram is present in 100 ml, right? So 1 milligram, simple maths, in 100 by 2000. सही है? हमको कितना चाहिए? 20. So 20 milligram that will be present in 100 by 2000 into 20. Please see it properly. अच्छे से देखो. We have simply calculated that we have decoded 2%. 2% means 2 gram in 100 ml. 2 gram का मतलब क्या है? It is 2000 milligram. Because we want that the unit is in milligram, right? So 2000 milligram is in 100 ml of solution. That's why it is said that 2% of strength. So 20 milligram will be in 1 ml of solution. तो हमको वो वायल के 10 ml से हमको कितना उठाना पड़ेगा? 1 ml. Right? Okay. In milligram per ml. कैसे करोगे? Okay, can anyone calculate here in the board? Or this will be too much? Okay? चल आ जाओ. You may wrong, no problem. Try is important. Come on, आ जाओ. No need to get shy. It's okay. Everyone makes mistake. Making mistake is good.
I'll read the question again for you. What is the strength of 0.1% solution in milligram per ml? अब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ दिया हुआ है, इसको तुम मिलीग्राम पर एमएल पे कन्वर्ट करोगे. नहीं रे 10 ग्राम नहीं. 0.1 ग्राम is 10 ग्राम. It's 100 ग्राम. It's 100. ना 0.1% का मतलब क्या है? 0.1% का मतलब है 0.1 ग्राम in 100 ml. अब 0.1 ग्राम कितना होता है? It is 100. 100. Okay. You're going good. Please guys see the calculation, how she is doing. 100 ग्राम नहीं है तो. This is 100 milligram only. 0.1 है ना. 0.1 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया ना. So this is milligram. मिलीग्राम होगा. कोई नहीं, ठीक है, चलेगा. Yes, thank you. Very good. Please clap. Well done. At least you have understood. That's why I asked. Now, come on. Okay, yeah, next slide. Next slide. If 1 ml of 1:2000 solution is diluted up to 5 ml, what will be the strength of the resultant solution? 1:2000 का मतलब क्या? इनिशियली यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया. ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन हमारे पास मार्केट से अवेलेबल होता है या जो हम स्टोर करके रखते हैं, दैट ऑलवेज इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो इनिशियली द स्ट्रेंथ वाज 1%. ठीक है, ओके, मतलब 1 ग्राम इज इन 100 ml. Now we have made this 100 ml by 2000. We have diluted this in 2000 times. Okay. So this will be multiplied by 2000. मतलब 1 ग्राम ही रहेगा 100 into 2000 ml पे, मतलब एक के बाद 5 0. सॉरी, 2 के बाद 5 0. 2 lakhs or 200,000 ml. 1 gram means 1000 milligram is in 200,000 ml. सही है. क्वेश्चन क्या था हमारा? अप टू 5 ml. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे. 1 2 3 1 2 3 मतलब 200 ml पे रहेगा 1 मिलीग्राम. ये हो गया हमारा डाइल्यूटेड 1:2000 का सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसका हम लोग लेंगे 1 ml, जस्ट 1 ml, राइट. ओके, तो हम लोग इसका ले रहे हैं 5 ml. तो 5 ml अगर लेते हैं हम इस सॉल्यूशन का, तो अगर हम लोग इसका 5 ml लेते हैं, सो इट विल बी 200 1/200 into 5 मिलीग्राम. क्लियर? ओके, इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, सो ये 40 1/40. अब 1/40 को प्लीज पॉइंट पे कन्वर्ट करो. मेरे दिमाग पर प्लीज कन्वर्ट 1/40 into पॉइंट. दैट विल बी योर्स. क्लियर? द मिस्ट्री हियर इज 1:2000. ठीक है, मतलब हम 1 ml जो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन था उसका मतलब 200 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे, एज्यूमिंग दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज 1%. उसके बाद CL बाय कैलकुलेशन करें, कितना था? 0.25. So it is equal to 0.25
milligram. So 1:2000 of this solution means 0.25. Now, why this ratio is important? Whenever any person suffering from severe allergic reaction, then the drug of choice is adrenaline. नाम सुना adrenaline? This is a neurotransmitter, but this is also a very important drug. Now, adrenaline को हम लोग directly push नहीं कर सकते. We have to dilute. Depending on the route, अगर हम लोग IM दे रहे हैं कि IV दे रहे हैं या subcutaneous दे रहे हैं, it can be diluted from 1:1000 to 1:100,000. ठीक है, कौन से रूट पे दे रहे हैं, किस डोज पे दे रहे हैं, किस रेशियो पे दे रहे हैं, बिकॉज द रिक्वायर्ड डोज इज वेरी लेस. और मतलब पॉइंट पे तो हम पीपेट पे लेके थोड़ी ना पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे. वी हैव टू मेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ ड्रग ऑल्सो, इट इज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, ताकि इंजेक्शन प्रॉपरली पुश हो पाए. ठीक है ना. तो उसके लिए हम लोग इसको सीरियल डाइल्यूशन करते रहते हैं. 1:1000, 1:10,000, 1:1 lakh, 1 लाख तक ही डाइल्यूट करते हैं यूजुअली, बट इन सम केसेस वी कैन डाइल्यूट मोर एज वेल. ओके.